Assalamu alaikum students. I am your instructor Muzaffar Saeed and I do hope that all of you will be absolutely fine and you will be enjoying your lives. Today we are going to discuss prepositions, and as I have already explained you in the last lecture that preposition is a very tricky concept. Even a hairbreadth of error can create catastrophe for you. Because in MDCAT, you are fighting for each and every number. If you have seen the merit list of last year, you can imagine that the score is mentioned in decimals. So, from that you can understand how tough the competition is. And if in such a tough competition, you lose even a single mark, it can create a lot of difference. So, I would request all of you to be very vigilant while taking the lectures of preposition, because the margin of error is very, very thin. And one more important thing, as I told you in the last lecture, that we are going to learn prepositions in a very, very different manner. And in this lecture and in the next lecture, I'll use the videos, the animations and the pictures to describe different prepositions. And I assure you that you will learn a lot and you'll have a lot of fun during these lectures. So let's start our lecture and see what we have for you. Let's students, we are about to start our lecture, and as I told you in the previous lecture of preposition that we will discuss preposition in a very different and in a very unique way. I feel that the best thing to do, the best way to memorize prepositions is using diagrams. As you can see, today we are again discussing in, on and at, but in a very different manner. You can see the tree right on the slide. How do we use in, out, in, on and at in this regard? At the highest point, as you can see, if something is on the highest point, on the top point, then we'll use at. Why we use at? Because I've already told you in the previous lecture that at is used as at a specific place. अब जब जो टॉप है, जो टॉप पॉइंट है, ऑब्वियसली वो क्या होती है, एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, एक बहुत छोटा सा नुक्ता होता है. जैसे आप देखते हो, आपने फिजिक्स में ये फिनोमेना पढ़ा हुआ है कि जब बॉल थ्रो करते हैं तो वो जब वापस आती है तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वो बिल्कुल उसका जो मोमेंटम है या वेलोसिटी या कुछ भी आप उसको स्पीड कह लें, वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे. वो एक बड़ा ही माइन्यूट सा पॉइंट होता है, वहाँ पर जाके वो एक लम्हे के लिए ठहरती है एंड देन इट कम्स बैक. तो वो जो पॉइंट है वो क्या है, वो बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है, एंड बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग एट. देन इफ समथिंग इज सिटिंग ऑन द ट्री और वो विजिबल है, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, विजिबल है, इफ अ बर्ड इज सिटिंग देयर और वो विजिबल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन. एंड देन इफ सम बर्ड और समवन इज ऑन द ट्री बट इट इज़ नॉट विजिबल, दरख्तों में कहीं, उसकी शाखों में कहीं छुपा हुआ है, हिडन है, विजिबल नहीं है, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे in. Now why do we use in? Because it is hidden somewhere, it is camouflaged somewhere, उसके अंदर कहीं मौजूद है and we cannot locate it. That is why we are using in. Another important thing is in the shade or in the shadow. This is very important because normally we commit error while using this particular preposition for shadow or shade. Normally we use under the shade, under the shadow. Now this is very interesting. Why it is interesting? Because as you can see in the slide, the shadow is on the ground. Shade कहाँ होगा, ground पे होगा ना. तो जब वो ground पे होगा तो under the shade का क्या मतलब होगा? As you can see, the shade is on the ground. शेड कहाँ आ रहा है, ग्राउंड पे नज़र आ रहा है. तो जब ग्राउंड पे वो नज़र आ रहा है तो फिर अंडर द शेड तो करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी के कब्र पे दरख्त उगा हुआ है ना, तो ही इज़ एक्चुअली लाइंग अंडर द शेड. अदरवाइज वी यूज़
in the shade. आपको आई डू होप कि आपको उसकी लॉजिक रीज़न समझ में आ गई होगी कि वाई वी यूज़ इन द शेड एंड नॉट अंडर द शेड, बिकॉज शेड इज़ ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड. तो अंडर द शेड उसको ज़मीन के नीचे तो नहीं भेजना ना आपने, उसको ज़मीन के ऊपर ही रखना है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई डू वी यूज़ इन द शेड. जैसे अंडर की मैंने लॉजिक बताई कि अंडर कैन नॉट बी यूज्ड, देन हाउ कैन वी यूज़ इन, बिकॉज एज यू सी इन द स्लाइड एक पूरा एक दायरा है, एक पूरा एक एरिया है जिसको शेड कवर कर लेता है, जिस पे शेडो मौजूद होता है. एंड यू आर रेस्टिंग, यू आर सिटिंग, यू आर लाइंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज यूज इन द शेड और in the shadow and not under the shade or under the shadow. Let's practice some of the MCQ of this phenomena as well so that you may better understand. First MCQ. The investigation revealed deception and political corruption upon the highest level. On the highest level नहीं आएगा, highest आ गया तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए आप at यूज़ करेंगे. ठीक है. And the right option for us will be option चार्ली. अब एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, हाउ कैन वी नो दैट इफ समथिंग इज सिटिंग इन द ट्री और ऑन द ट्री, और यू मे से दैट हाउ कैन वी नो दैट इफ समथिंग इज विजिबल और नॉट विजिबल. तो कहीं ना कहीं आपको हिंट देगा, जैसे कि आपको इस MCQ में उसने क्लियरली हिंट दिया हुआ है. देखिएगा, the cat was hiding in the tree ready to pounce on the birds. Now hiding clearly mentioned है, तो इसका मतलब क्या होगा कि you will use in the tree and not on the tree. Next देखिएगा, he didn't care if it was 97 in the shade or 16 below 0. आपकी टेक्स्ट की लाइन है, ठीक है. 16 in the shade, 97 in the shade. Why? Because it is a specific area where he was standing, where the shadow was actually present. वो क्या तो एक specific area है, और उसके लिए आप क्या use करेंगे, he was standing in that area, and that is why we always use in the shade or in the shadow. So a right option will be option D. Now same is the case with rain, light. The same goes for these two things as well. You can be, as you see in the slide, you can be under the umbrella, but you cannot be under the rain, because rain is falling on the ground. If the rain is falling on the ground, how can you be under the rain? Under the rain तो क्या होगा कि आप ज़मीन के नीचे घुसे हुए, तो ज़मीन के नीचे तो नहीं घुसना आपको उस बारिश में, आपके इर्द गिर्द बारिश बरस रही है, and you are standing in that rain. Under the umbrella is something else, जो चीज़ आपके ऊपर मौजूद है, that is covering you and you are standing under it. Under the tree तो हो सकता है, under the umbrella भी हो सकता है, but under the shadow and under the rain it is not possible. Same is the case with light. You cannot be standing under the light. You can be standing under the sun. ठीक है, under the sun तो आप हो सकते हैं, but you cannot be under the light, because light is pouring on the ground. ज़मीन पे पड़ रही है रोशनी, एंड जब ज़मीन पे पड़ रही है तो अंडर द लाइट, तो मतलब ये होगा कि आप ज़मीन से भी क्या हैं, नीचे हैं. सो दैट कैन नॉट बी द केस इन द सनलाइट और अंडर द सन. इन द सेम वे इन द रेन एंड अंडर द अम्ब्रेला. MCQ देखें, वी वर कॉट इन द रेन एंड केम होम सैचुरेटेड. In the rain, not under the rain. So our right option will be option delta. Next देखते हैं, under the light of recent incidents, we are asking our customers to take care of their personal belongings. Under the light नहीं होगा, क्या होगा, in the light होगा. दोनों सूरतों में हम क्या यूज़ करेंगे, in the light, and our option will be option Charlie. Now these slides are very important for you. बहुत ध्यान से इनको देख लीजिएगा, और ये प्लेसेस के हवाले से हैं, एंड कॉमनली दीज प्रपोजिशंस आर यूज्ड इनकरेक्टली. मैं इन तीन पे एम्फसाइज भी इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट आप यूज़ करते हो. बाकी फिर आगे जैसे जैसे जाएंगे तो आई लेट यू नो अबाउट डिफरेंट प्रपोजिशंस एज वेल, बट ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देखते हैं, as you can see in the slide.
So as you can see, we are at the first place talking about at. अब at कहाँ कहाँ और से हो सकता है? At the entrance, obviously entrance भी क्या है? Specific point है. We have already discussed at a specific building, Chrysler, जैसे you can see at the Chrysler building. Then at school, at college, I've already told you at school or at college, that is a very common thing. Then at the top, at the highest point, we've already discussed कि ये highest point पे हम क्यों use करते हैं, because it is a specific point. Then at certain business concerns, जैसे at the hairdresser, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक specific building है, तो इसके लिए भी हम क्या use करेंगे, at hairdressers or any business concern you can think of. Then at the top of the page, and yes, importantly, festivals, at the party, he was present at the party, on the party नहीं कहते, on याद रखें physical positioning के लिए actually, तो at the party event के लिए हम क्या use करते हैं, जैसे हमने पिछले lecture में किया था, at Eid, at Easter, at Christmas, and then streets के लिए भी हम क्या use करते हैं, at. स्पेसिफिक स्ट्रीट एड्रेस के लिए जब उसको यूज़ करेंगे तो विल यूज़ एट. देन फिर हम एट ही को फर्दर डिस्कस करते हैं. एट द डॉक्टर, एट द फ्रंट डेस्क. अब देखते हो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना, स्पेसिफिक बिजनेस कंसर्न्स है. देन एट द एंट्रेंस और एट द एग्जिट, ये दोनों आ जाएंगे. देन एट द क्रॉस रोड. अब ऑन द रोड आप कहते हैं और एट द क्रॉस रोड कहते हैं. वाई? Because road is comparatively bigger place and crossroad is a specific place. तो specific place के लिए हमने क्या करना था, वही जो last lecture में हमने किया था पिज़्ज़ा स्लाइस, कि बड़ी चीज़ के लिए क्या होगा, on, बड़ी चीज़ के लिए होगा in, फिर छोटी चीज़ के लिए on, और उससे छोटी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, that is at. तो road बड़ी चीज़ है तो on, और crossroad छोटी चीज़ है तो उसके लिए क्या होगा, at. Then at the crossroad. So this was all about at. At हमने इन जगहों पे यूज़ करना है. Now we come to on. On को हम देखते हैं कि on कहाँ यूज़ होगा. ऑलरेडी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, फिर फर्दर डिस्कस करते हैं. ऑन द मोटर बाइक, मैंने आपको कहा था कि जो ओपन ट्रांसपोर्ट हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन. अब ओपन है, मोटर बाइक ओपन है, बाइसिकल ओपन है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ऑन. देन वी टॉक अबाउट ऑन द वॉल. ही वॉज सिटिंग ऑन द वॉल. वॉल भी क्या है, उसके आप ऊपर, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ऑन इज यूज फॉर फिजिकल पोजिशनिंग. तो ऑन उसके आप ऊपर बैठे हुए. देन ऑन द रूफ एंड ऑन द सीलिंग, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है. इन दोनों के साथ आप क्या यूज़ करते हो, ऑन, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग ऑन देम. ठीक है, उसके ऊपर मौजूद है ना, तो फिजिकल पोजिशनिंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यू विल ऑलवेज गो फॉर ऑन. देन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, television or any modes of communication will take on, as I've explained in the last lecture, on the radio, on television, and avenues and island will also take on. Now another very important thing, that is on the list, on the menu. All these things depicting a list of things like on the list, on the staff, on the bench, on the committee, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन सब के लिए अब यूज़ करेंगे on. ठीक है, यहाँ पर हम पिक्चर्स और एडिटर सब डालेंगे, ज़रा देख लीजिएगा, बेंच की, कमेटी की, स्टाफ की, इनकी पिक्चर्स ज़रा हम देख लेंगे. कोई वो यहाँ पे नहीं है, वो आपको ज़रा ऐड करनी पड़ेगी. So it is very important that for all these things, normally we use in the list. No, it is on the list. Not in the menu, on the menu. He was included not in the staff. He was included, his name was mentioned not in the staff. His name was mentioned on the staff. Now what is the reason for it? Why do we use on for list, staff? Because it is printed on it, ना, उसके ऊपर मौजूद होता है उसका नाम. लिस्ट के अंदर तो शामिल नहीं होता ना. लिस्ट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप कुछ चीज़ डाल दें, तो उस लिस्ट के ऊपर मेंशन्ड है. दैट इज़ वाई वी यूज़ on the list.
ठीक है, his name was there on the list, his name was printed on the list. So यहाँ भी यहाँ हम कहते हैं कि चिकन मंचूरियन इज नॉट ऑन द मेन्यू, इन द मेन्यू नहीं कहेंगे, इट इज ऑन द मेन्यू बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज प्रिंटेड देयर, ठीक है. तो ये देख लीजिएगा, आई हैव शोन ऑल दीज थिंग्स ऑन द स्लाइड्स एज वेल. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डायरेक्शन ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ठीक है. द स्कूल इज ऑन माई लेफ्ट, द कॉलेज इज on my right, not in my left or in my right. But for directions we use in, वो हम अगले चंक में भी next slides में देखते हैं. Now we come to the next one, in. I've already explained that in enclosed space we'll use in an elevator, in a room, in the building. He was sitting in the room, he was स्टैंडिंग इन द एलिवेटर. तो ये इनक्लोज स्पेस है, चारों तरफ से क्या है, बंद है. देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नेवर ऑन द स्काई, इट इज इन द स्काई, ठीक है. बिकॉज आपने बचपन में एक पोएम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, व्हाट अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई. सो वहाँ से भी आप उसको याद रख सकते हैं. नॉर्मली हम कहते हैं उर्दू में जब हम उसको करते हैं तो वी से के सितारे आसमान पर चमकते हैं. तो व्हेन वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश वी से द स्टार्स शाइन ऑन द स्काई, नो द स्टार्स शाइन इन द स्काई. उर्दू में हम उसको ऑन करते हैं, बट इन इंग्लिश वी यूज इन. सो ये एक चीज़ देख लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग दैट विल ऑल्सो टेक in the race, in competition. He participated in that competition. He was in the final stages of the World Cup. तो in the final stage, in the competition, इन सब के लिए भी क्या यूज करेंगे, in. Now the most important thing is directions. Directions जो आपकी 4 directions हैं उनका जिक्र करने के लिए, to mention these 4 directions we use in the south, in the north, in the west, in the east. ठीक है, तो ये देख लीजिएगा. नाउ वी कम टू द स्लाइड्स एंड डिस्कस हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स. सो पहला एमसीक्यू देखते हैं जी. ऑन द साउथ ऑफ स्पेन अक्रॉस द स्ट्रेट फ्रॉम सयूता वर स्टेशन द सीरियन ट्रूप्स फ्रॉम डेमास्कस. अब ऑन द साउथ ऑफ स्पेन नहीं आएगा, क्या आएगा, इन द साउथ ऑफ स्पेन, बिकॉज डायरेक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन. एंड आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली. The young man saw a couple on a crossroad near the General Post Office. We have just learned that for crossroads we do not use on. Road के लिए हम on use करते हैं, but for crossroads we use at. So our right option will be option alpha, because for crossroads, as I've already told you, we use at and not on. Now these are very important things. Be very, very vigilant about these slides. And this is about the furniture. While using different prepositions for furniture, we do make errors, and a lot of errors, frankly speaking. So these slides will help you understand how you can use the correct preposition for every type of furniture. So first we come to chair. If it is an armed chair, we'll use in. उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एंड यूज करेंगे. एंड आई टेल यू द रीजंस एंड लॉजिक्स बिहाइंड इट, कि क्यों आप उसके लिए जो है वो इन यूज कर रहे हैं और क्यों उसके लिए आप ऑन यूज नहीं कर रहे. नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि कुर्सी पर बैठना उर्दू में, तो वहाँ इंग्लिश में क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ऑन, बट इन इंग्लिश वी यूज इन. Why do we use so? You can see it in the picture that chair has arms on both sides. So when you are sitting actually in that space. वो जो दोनों बाजुओं के दरमियान जगह बनी हुई है उसके बीच में बैठ रहे हैं. And that is why we are using in. That is a confined space. दोनों साइड से आप जो है ना वो बाउंड है. Even if it is a single arm chair, एक साइड पे भी अगर उसकी बाजू बना हुआ है तो आप कभी उसको ट्राई करें तो यू विल लाफ एंड यू विल मेमोराइज दैट प्रपोजिशन कि आप स्ट्रेट अवे उस पर यूँ नहीं बैठ सकते. बिकॉज इफ़ यू विल सिट देयर तो क्या होगा, आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, आप उसके बाजू पे बैठेंगे. सो यू विल हैव टू गो इन
थोड़ा सा साइड पे होके you'll have to टेक अ टर्न एंड देन फिर आप उसमें बैठते हो, और वो जैसे आप कॉलेज में बैठते हो तो थोड़ा सा घूम के आप आते हैं और वो उस कुर्सी के अंदर फिटन होते हैं. दैट इज वाई फॉर चेयर वी यूज इन. ऑन द चेयर हो सकता है, लेकिन उस सूरत में जब वो आर्म लेस चेयर हो. स्टूल के लिए भी आप क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे. ठीक है, वजह अब इसकी क्या है? बिकॉज स्टूल में या आर्म लेस चेयर पे, जैसे डाइनिंग टेबल की चेयर है, आप स्ट्रेट अवे जाके यूं बैठ सकते हैं, बट आर्म चेयर में आप ये नहीं कर सकते. सो आई होप सो यू वुड हैव गॉट द लॉजिक बिहाइंड इट कि क्यों हम इन यूज कर रहे हैं और ऑन यूज नहीं कर रहे. I do hope that it is clear. Now, another question may come to your mind. Now, another question may come to your mind, and that is, if it is not mentioned whether the chair is armed or armless, सिर्फ चेयर कहा हुआ है, मेंशन ही नहीं है कि बाजू वाली है कि बाजू के बगैर है, देन फिर हम क्या करेंगे? देन यू विल गो फॉर इन. रीजन, बिकॉज नॉर्मली चेयर क्या है? वो आर्म्ड ही होगी. If it is not mentioned whether it is armed or armless, you will go for in. ठीक है, और आप इसमें पढ़ भी चुके हो कि मिस्टर सीवर्ट sat in Norma's chair. in ही यूज करेंगे, on यूज नहीं करेंगे. Now we talk about bed. If you are sitting on the bed, you'll use on, but if you are lying in the bed, लेटे हुए, then you'll go for in. Why? Interesting है, बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी रीज़न. व्हेन यू लाई ऑन द बेड, एक्चुअली आप बिल्कुल सीधे तख्ते पे नहीं लेटे होते हैं. लाइक यू आर नॉट सिटिंग स्ट्रेट लाइक दिस, ऐसे तो नहीं बैठे होंगे ना. आप जब लेटते हैं उस पर तो देयर इज अ सर्टन कर्व. ठीक है, वो कर्व जब, एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड एज वेल, दैट द चाइल्ड इज लाइंग देयर एंड देयर इज अ कर्व. चारपाई पे तो लेटते हो तो वो कर्व थोड़ा बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो जाता है, एंड यू आर लाइंग इन दैट कर्व. वो एक लैप सी बन जाती है, एंड यू आर लाइंग इन दैट कर्व. दैट इज वाई वी यूज इन, एंड यू कैन सी इट ऑन द स्लाइड एज वेल. नाउ टॉकिंग अबाउट डे बेड, सोफा, काउच, बेंच, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन. वाई? बिकॉज देयर इज नो कर्व एट ऑल. आप उसके ऊपर डे बेड के ऊपर बैठे हुए हो, सोफा के भी आप ऊपर बैठे हुए हैं, और काउच के भी आप ऊपर बैठे हुए हैं. नाउ यू मे आस्क, सर काउच के भी सोफ़ा के भी तो दोनों तरफ बाजू होते हैं, सिंगल सीट के भी बाजू होते हैं, बट द क्वेश्चन इज, आप सोफे पे बैठना चाहो तो उसके बाजू आपको हिंडर नहीं करते, रोकते नहीं है. आपके पीछे सोफ़ा पड़ा हुआ है और आप ये बैठना चाहें तो यू कैन ईजिली सेट, बट दैट कैन नॉट बी डन इन केस ऑफ चेयर. तो ये एक विजिबल डिफरेंस जो है इन दोनों में मौजूद है. That is why for sofa, day bed, couch, bench, we go for on and not in or at. Examples देखते हैं इनकी, फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ और फर्नीचर की तरफ. They went to living room and Mr. Stewart sat in Norma's chair. Now we know that for chair we do not use on, we use in. So our right option will be option Charlie. Next, Norma was still sitting on the sofa. What do you think it was? What do you think it was? She said. She asked. So यहाँ पर clearly visible है. What Norma was still sitting in the sofa. अब in the sofa नहीं होगा, क्या होगा? Norma was still sitting on the sofa. Because sofa के लिए आप क्या use करते हो? You go for on and not for at. ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन डेल्टा. द वुमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड. अब अंडर द डे बेड नहीं हो सकता, अंडर लाइंग अंडर द डे बेड तो फिर भी शायद कुछ कंसिडर किया जा सके, बट सिटिंग तो ऑब्वियसली बेड के नीचे सिटिंग तो पॉसिबल नहीं है. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा, बिकॉज डे बेड, बेंच, काउच, सोफा, इन सब के लिए हमने क्या यूज करना है? ऑन यूज करना. कुछ और एग्जांपल्स करते हैं. बट आई हैव सीन एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन लाइंग इन द बेड ऑफ निग्लेक्ट इन सच केसेस. अब यहाँ आप क्या कह रहे हो? बट आई हैव सीन एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन लाइंग इन द बेड.
not on the bed. Because I have already explained, when you lie on the bed, it forms a certain curve. एक यूं depending on your weight वो curve ज़रा और गहरी भी हो सकती है, but it forms a curve and you actually lie in that curve. तो उस कर्व के अंदर चूंकि आप होते हो, एक लैप बन जाती है, जैसे गोदी में उठाया होता है आपको, तो इसलिए आप उसके लिए क्या यूज करते हो, इन, एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा. नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं जी. There was nothing she could do but fall on the bed and cry, so Della did it. अब यहाँ बड़ा ट्रिकी हो जाएगा. अब है तो बेड ही, बट यू आर फॉलिंग ऑन द बेड, इट कैन नॉट बी इन द बेड. अदरवाइज लाइंग होता तो फिर हम क्या करते, इन द बेड. अब फॉल आप बिस्तर पर गिरेंगे ना, ठीक है, बिस्तर के अंदर तो नहीं गिर जाएंगे. सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा. नेक्स्ट एमसीक्यू फिर देखिएगा. He then went to another part of the courtyard and sat on a matted bed. ठीक है, अब on ही यूज करेंगे, on the matted bed ही करेंगे, in the matted bed नहीं करेंगे. Because sitting के लिए I've already told you we use on not at. और day bed के लिए वैसे भी आप क्या यूज करते हो, वैसे भी on ही यूज करते हैं. Now this is very important. ये स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू मेक अ होल लॉट ऑफ एरर्स while attempting all these things. The first thing is on the table. When do we use on the table? If it is a smaller animal or a non-living thing, you use on the table, on the desk. As you can see, ठीक है, आप देख रहे हो कि the cat is on the table. बिकॉज वो एक छोटा जानवर है जो उसके ऊपर रखा है. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, वो उसके ऊपर रखी है. फिलॉसफी समझ लें, ऑन क्या है, फिजिकल पोजिशनिंग के लिए है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, ऑन द टेबल. जबकि ह्यूमन बीइंग अगर होंगे तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एट द टेबल एंड एट द डेस्क. वाई, वजह क्या है, वजह उसकी ये है कि एट इज यूज फॉर समथिंग दैट इज वेरी क्लोज. आप कॉमनली यू मस्ट हैव यूज्ड इट ऑन सो मेनी डिफरेंट ओकेजन्स. ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, यू मस्ट हैव रेड इट एज वेल. ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो उस पर आप क्या करते हो, एट द डोर. उसको क्यों कहते हैं, बिकॉज ही इज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू द डोर, दैट इज वाई वी यूज एट. ऑन द डोर तो उस सूरत में होगा ना कि दरवाज़ा तोड़ के उसने नीचे बिछाया और उसके ऊपर खड़ा हो, तो फिर तो ऑन द डोर फिजिकल पोजिशनिंग आ गई. एट द डोर, व्हाई डू वी यूज एट द डोर, बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू इट. तो वहाँ हम एट इसीलिए यूज करें. इन द सेम मैनर here we are using at for human beings because they are very close to the table, they are very close to the desk. As you can see, they are sitting very close to the table, very close to the desk. That is why for human beings we do not use on, we use at. और आप गलती क्या करते हो, आप करते हो we were sitting around the table, round the table. Majority of people are confused between around and round, but both are incorrect. Actually it is at the table, at the desk. और आगे हम इसकी बेशुमार एग्जाम्पल्स भी करेंगे because that is a tricky thing. With कहाँ पर इस्तेमाल करते हो, with is used for physical positioning. हम अभी डिटेल में इसको आगे डिस्कस भी करेंगे. With is used for physical positioning and not for anything else, not for non-living beings. ठीक है, non-living beings के साथ physical positioning के साथ आप with यूज नहीं करते. दोनों अगर ह्यूमन बींग्स होंगे तो देन यू विल यूज with. ही इज स्टैंडिंग with his friend बिकॉज बोथ आर ह्यूमन बींग्स. तो उनकी फिजिकल पोजिशनिंग साथ साथ रहने के लिए आप क्या यूज करेंगे, with. देन स्टैंडिंग बाय द डोर, प्लेस्ड बाय द डोर और एट द डोर. ये बाय को पहले समझ लें. इफ one of the two objects is non-living, then we'll go for by. If both are non-living, obviously तब भी हम क्या use करेंगे, by. Even one of them is non-living, we'll go for by, not with. He was standing by the door. Why? Because the door is non-living and the person is living, and because one of the things is non-living, we are using by.
अगर दोनों नॉन लिविंग होती तो तब भी बाय, एंड इफ बोथ आर लिविंग बींग्स देन विल गो फॉर विद. जैसे हमने कहा कि इज स्टैंडिंग विद हिज फ्रेंड. सो दिस इज हाउ इट गोज. At the door, I've already explained you if something is very close to it, तो आप उसके लिए क्या use करते हैं? At the door. Now these nouns are very important as far as the correct use of preposition is concerned, because you normally make error. So be very very cautious about using prepositions with all these nouns. So now we are practicing our MCQ. देखते हैं. I remember him, he used to sit at that far desk by the wall. He wasn't much better either. अब दो चीज़ें आपको देखनी है. अल्फा ऑप्शन में आप देखें तो प्रॉब्लम क्या है? On that desk. It cannot be on that desk. It must be at that desk. And secondly, with the wall नहीं हो सकता. बीटा ऑप्शन में आप देख रहे हो, it is with the wall. तो with the wall भी नहीं हो सकता because he is a living being but wall is a non-living being. तो ये दोनों तो विद के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते. सो विल गो फॉर ऑप्शन डेल्टा बिकॉज यहाँ दोनों चीज़ें ठीक हुई हुई हैं. एट द वॉल, एट द डेस्क एंड बाय द वॉल. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा. नेक्स्ट MCQ देखिएगा. द होल पेजेंट ऑफ इट swung before him as he sat by the fire that afternoon. अब by the fire ही right option है. With the fire नहीं हो सकता because with can only be used if both the things are living beings. Now fire is not a living being, that is why we are using by the fire, and the right option is option alpha. On the fire तो हम use नहीं कर सकते because he cannot sit on the fire. On the fire तो बैठेगा तो फिर क्या होगा? भाईजान अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, उड़ जाएंगे. अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट MCQ में, by his 13 years old brother, Abdur Rahman dashed into the river. Now, both these objects are living beings. He and his brother both are living beings. तो हम यहाँ क्या use करेंगे? We will go for with, and our right option will be option beta. यहाँ हम by use नहीं करेंगे because though both these things are not non-livings, they are living beings. Next MCQ देखते हैं. He took his fourth form as usual after call over, setting them grammar to learn by heart while he himself stood on his desk in a cold continuing trance. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अल्फा में प्रॉब्लम क्या है? On his desk है. That cannot be on his desk. That should be at his desk. So our right option will be option beta. Next देखिएगा. The sudden hush as he took his place at his desk on the dais. At his desk होगा. It cannot be on his desk, not upon his desk. ठीक है, इनमें से in the desk तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता. डेस्क के अंदर थोड़ी घुसेगा वो. So our right option will be option beta. Next देखिएगा. At the front door, he shook his hands. Goodbye, my boy. Again, you can see at the front door, दरवाजे पर खड़े होके. He was standing very close to the door. That is why we said at the door, not on the door, in the front door, with the front door. With cannot be used because door is a non-living thing. And if one of the two things is non-living, we'll go for by or at. We cannot use with. So our right option will be option Charlie. Now these three things are again very important: on the ground, in the ground and under the ground. Learn to differentiate between these three. I'm giving you the visual explanation of these prepositions because normally we tend to memorize them only. But you can see that it is not only a case of memorization. It can be understood in a very conceptual and a very different manner. So learn to differentiate between these three: on the ground, in the ground and underground. Underground तो बहुत clear है, पता ही होता है आपको. On the ground important है और in the ground क्या है? If something is grown in the ground, ठीक है, कोई चीज़ बीजी जा रही है, ठीक है, sown into के सेंस में आप यूज़ करते हो in the ground. So let's move to our MCQs और देखते हैं
कैसे यूज होंगे। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी। इट सीम टू चिप्स दैट दे माइट जस्ट एज वेल स्टे वेयर दे वर द ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द स्कूल हाउस। ठीक है, ऑन द ग्राउंड फ्लोर करेंगे, एट द ग्राउंड फ्लोर नहीं करेंगे। वैसे भी हम डिस्कस कर चुके कि फ्लोर्स के लिए या सरफेसेस के लिए वो यूज ऑन एंड नॉट एट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू tend to make error while attempting this sort of an MCQ. He watched all the important matches on the Brookfield ground. The right option will be option beta. अब गलती आप कहाँ करते हैं? You feel Brookfield ground is a specific place and you go for at, or sometime people go for in as well because the field gets a stadium. तो स्टेडियम के तो अंदर ही मैच होता है, तो एक तो ये वजह हो सकती है इन चूज करने की। सेकेंडली यू चूज एट बिकॉज यू फील कि ब्रुकफील्ड ग्राउंड इज अ स्पेसिफिक प्लेस, बट उस जगह पर मैच नहीं हो रहा, ग्राउंड के ऊपर मैच हो रहा है। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग different prepositions with different nouns because only a slight difference can create an error. So be vigilant about it. Then last MCQ इस context में देखते हैं, he almost whispered anything grown in the new ground has a better flavor. ठीक है, अब grown बीजी जा रही है, उगाई जा रही है उसमें से, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? on the new ground नहीं होगा because that is not on the ground, that is in the ground. ठीक है, वहाँ उसके अंदर बीजा उसको जा रहा है. That is why our right option will be option beta. Now these pictures will help you understand different prepositions in a classical manner. You can use these pictures for your understanding. Movements के हवाले से हैं और placement के हवाले से हैं. आप देखें in the box. If something is in, तो that is in the box. और अगर किसी चीज के ऊपर मौजूद है तो you can see it is on the box. Then under the box and next to the box, बड़ा ही self explanatory है. Under the box क्या है? If something is lying under. Then between the boxes, you can clearly see between these two things. Among the boxes, if there are too many boxes, दो से ज़्यादा हैं तो फिर हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? Among यूज़ करते हैं. In front of or behind the box, पीछे अगर कोई चीज़ मौजूद होगी, as you can see on the slide, तो that will be behind the box. और अगर सामने मौजूद है तो that will be in front of the box. Then above the box, this is very important. Know the difference between above and on. On, as you can see, that was something directly touching the surface. उसको हम क्या use कर रहे थे? We were using on. While in case of above, the object is not touching the surface itself. Like if the remote is placed on my hand, that is on my hand. But if it is lying here, अगर मैंने उसको यहाँ hold किया हुआ है, तो that is above my hand. That is the difference between on and above. And same as the case with under and below. Below is something that is directly not touching it. अंडर भी हम वैसे इसके लिए यूज़ करते हैं. इसके लिए जो डायरेक्टली टचिंग चीज़ है उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल चीज़ जो है दैट इज़ बीनीथ. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर इज वेल इंशाल्लाह. नियर टू बॉक्स इफ समथिंग इज़ वेरी क्लोज टू इट एंड फार फ्रॉम द बॉक्स मीन्स इफ समथिंग इज़ लाइंग अवे फ्रॉम द अदर. इसको आप देख लीजिएगा. दीज प्रपोजिशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगेन सम ऑफ द prepositions regarding the placements, but here we are talking about movements. So देखते हैं, down the stairs. If something is coming down, you'll use down the stairs. That can be for the non-livings and that can also be used for living beings. He went downstairs. नीचे चला गया. He went upstairs. वो ऊपर चला गया. Out of the box is something is coming out from into it is coming out. तो फिर क्या है? From within a box it is like emerging. तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? Out of the box or into. If something is going from outside to inside तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? Into.
लास्ट स्लाइड में हमने देखा था इन और आउट, दे वर ऑलरेडी देयर, वो पहले ही से वहाँ मौजूद थे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, वी वर यूजिंग इन और आउट. While in the next slide you can see into or out of, these are two different things from out or into, out or in. Out of means something was lying there and it was pushed out, तो वो क्या हो गया, out of. And into means something was lying outside, then it was pushed into. Suppose if I say I am standing in the room, तो मैं पहले ही से वहाँ मौजूद हूँ. And he went into the room, बाहर से अगर वो कमरे में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, he went into the room. So that is the core difference between these two. और स्टेट भी अगर कन्वर्ट होगी तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, into. ट्रांसफॉर्म कोई चीज़ होगी तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, into यूज़ करेंगे, बिकॉज दैट इज अ चेंज ऑफ कंडीशन ना. यहाँ भी into इसीलिए यूज़ हो रहा है बिकॉज previously it was staying outside but now it was put inside. That is why we use into. Then towards the box, if something is going towards something, or outside the box क्या है, उससे दूर जाना. Pass the box. Now this is very important. This preposition is not normally used. Pass the box होते हैं करीब से किसी चीज़ के गुजर जाना. If something is passing near you, that is where we use pass the box. Or like I can say a fast moving car passed me, वो मेरे पास से गुजर गई. Over the box, if it covers the whole surface and goes to the other side, तो उसको हम क्या कहेंगे, over the box. And onto the box, जैसे हम किसी चीज़ को पटकते हैं, if we bounce something on a particular surface, that is called onto. Now you can, just like in and into or out of, same, in the same manner you can identify the difference between on and onto. On is something that is already lying there, like this remote is on my hand, ये मेरे ऊपर रखा हुआ है, but इसको अगर मैं पटक दूंगा, if I bounce it on my hand, if I throw it on my hand, it will take onto. Off the box, if something is removed from the other thing, तो that is off. जैसे हम कहते हैं put off, ठीक है. Offload, you must have heard it, offloading something, किसी चीज़ को उतारना, तो वो off इसी context में होता है. Then around the cube, around the box, if something is circling around, तो उसको आप around कहते हैं, round नहीं कहते उसको, round is a shape, ठीक है, around कहते हैं उसको. And then under the box, over का reverse है ये, over ऊपर से गुजर रहा था and under is going through the same path but the side is completely opposite. Along, if someone is traveling by your side, साथ साथ चलते जा रहे हैं, तो that is along. मुझे वो शेर बड़ा अच्छा लगता है, along आप उससे रिलेट कर सकते हो. कहते हैं कि उन्हीं रास्तों ने जिन पे कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हमसफ़र कहाँ है. सो वो जो हमसफ़र है दैट इज़ गोइंग अलॉन्ग विद यू, ठीक है, वो आपके साथ साथ चल रहा है. देन अक्रॉस, ये विथ वाइज या हॉरिजॉन्टली जब आप किसी चीज़ को क्रॉस करते हैं, रोड अबूर कर दे, तो दैट इज़ कॉल्ड अक्रॉस. एंड देन थ्रू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थ्रू क्या है कि एक साइड से कोई चीज़ दाखिल हो और पूरी उस ट्यूब में से, उस पाइप में से गुजरते हुए, ये उस पूरे प्रोसेस में से गुजरते हुए दूसरी तरफ से निकल जाए. दैट इज़ वेयर वी यूज़ थ्रू. So these are very, very important prepositions. You must memorize them, and I have tried my best to explain them using diagrams, because these diagrams are self-explanatory. Instead of writing rules and boring and dull statements, I have used diagrams to explain it in a better and more effective manner. So अब चलते हैं MCQ पे. This noble structure, पहला MCQ हम देख रहे हैं. This noble structure transformed in a Christian cathedral in 1236 has survived to the present day. अब transformed की बात हो रही है, change of state की बात हो रही है, तो फिर हम in नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या use करेंगे, into.
and our right option will be option beta. Next MCQ, some baggage was brought out of the palace and placed in the car. Placed, you may say place into the car, but we will use place in the car. Why? Because placed is already used. एक वर्ब हमने पहले ही यूज कर लिया, ठीक है, जैसे हम एंटर के साथ इन यूज नहीं करते ना, तो उस तरह प्लेस के साथ दोबारा इनटू की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्लेस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी that it was taken from outside and now it is lying in the car. So our correct option will be option beta. Let's students, अब हम discuss कर रहे हैं our prepositions, but now we'll discuss them individually. I'll take out a preposition and explain where and how we can use that preposition. We'll again go for the same visual method. The visual images we'll use to describe the functions of each and every preposition, because I feel if I go on writing lengthy and long and complex sentences about the usage of prepositions, of different prepositions, you'll get fed up and you'll say we are not watching that video. So instead of making you feel bored, I'm using that interactive and interesting method of images and animations so that you better understand the concept of prepositions. The first preposition we are going to discuss is above. Now above can be used in 4 different manners. 4 तरह से हम इसको यूज करते हैं. Primarily इसके 4 ही यूजेज हैं. देखते हैं कौन कौन से हैं. The first one is higher in position. Higher in physical position कोई चीज होगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Above. Remember, if you are using above, the object must not be touching the other object. It should be way above. As we can see, the plane is flying above the clouds. Got it? So the plane is not actually directly touching the cloud. It is flying above the clouds. ठीक है? तो यहाँ आप above को इस context में use करेंगे. Then there is another usage of above as something that is higher in position but not directly upon you. वहाँ भी हम above को use करेंगे. As you have seen in your lesson Clearing in the Sky, the author says the pines on the top of the mountain above us looked as if the finger of their long boughs were fondling the substance of the white cloud. You remember? The pines on the top of the mountain above us. So these pines were not exactly on their heads, right on them. They were physically higher in position, but they were just on the side of the place where they were standing. So ये भी ज़रा देख लीजिएगा कि above को हम 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं. Number 1 तो वो क्या होनी चाहिए? उससे ज़रा ऊपर उठा होना चाहिए उसको. Secondly क्या होना चाहिए? एक तो बुलंद होना चाहिए. दूसरा क्या होना चाहिए? थोड़ा सा उसको साइड पे होगी तो तब भी हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? Above यूज़ करेंगे. ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी Clearing in the Skies. Secondly, if something is higher in quantity or number or age or something like that, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? Above. As we often say, the temperature is above 30 degrees centigrade. Now, this is beyond 30 degree, beyond that number, beyond that specific number, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करें? We are using above. Then, the third usage of above is if something is higher in rank or status. As you can see, as I have written, the army chief is above all generals. Army chief जो है, he is higher in rank, higher in status than all other generals. तो उसके लिए हम क्या use करेंगे? Above. Because that is way beyond their stature, he is way beyond their stature or status. उसके लिए भी हम above use करते हैं. Then finally, a very interesting thing regarding the usage of above is if you cannot comprehend something, you always say above understanding. If something is beyond your understanding, you can also use above for it. Okay? As you can say, this concept is above my understanding. कि ये concept जो है वो मेरे से क्या है? ऊपर की चीज़ है, next level की चीज़ है.
So you can see clearly that these pictures are self-explanatory. You do not have to remember, you will just have a look at these pictures and you will get to know where to use above. And I feel this is the best way you can use to memorize, to clear your confusions about prepositions. Now we come to the next MCQ of next stage. Now we come to the next stage and that is practicing MCQ. पहला MCQ हम देखते हैं जी इसका. The pines on the top of the mountain above us looked as if the fingers of their long boughs were fondling the substance of a white cloud. अब underneath तो नहीं हो सकती. पहले अगर आप option alpha देख रहे हो तो underneath us नहीं हो सकता, because underneath is something that is directly under you, directly below you. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? Underneath. बीटा ऑप्शन में क्या है? The pines on the top of the mountain in us. There cannot be any pine in you, so that is out of question. And Charlie at us भी नहीं हो सकता, because at is something that is very close. So आप क्या कह रहे हो? Above us. So the right option for us in this MCQ will be option delta. Next MCQ पे चलते हैं. अब ये देखिए, we are talking about something that is higher in rank, higher in status, but above all we find the universe frightening because we cannot see any sign of life. That all these are reasons of our frightening, of our terror, but above all these reasons we find this universe frightening because we cannot find any sign of life. So above all आएगा, that is something higher in status, higher in number, ठीक है, higher in rank. उस context में हम कह रहे हैं कि all these reasons can be the true reasons, but above all these reasons the most important one is that we cannot find any sign of life. Next देखते हैं MCQ. After raising the temperature 10 degree above the boiling point, he found that no bacteria were left alive. अब option alpha देखें, after raising the temperature 10 degree below तो नहीं हो सकता, below तो raising के साथ जाएगा ही नहीं. Then under boiling point भी use नहीं हो सकता because that is beyond that, raising के साथ तो under नहीं जाएगा. And delta option भी नहीं हो सकता at boiling point. उस specific point तक तो नहीं लाना, हम कह रहे हैं raising the temperature above होगा right option. So our correct option will be option Charlie. Finally हम देखते हैं इसका last MCQ. The bylaws of the company compel the juniors to respect those who are above them. This is about the status, the rank. इस company के जो bylaws हैं, they actually compel the juniors to respect those who are above them. So our right option will be option alpha. ठीक है? So this was it for today. अब हम चलते हैं वापस और लेक्चर अपने को कंप्लीट करते हैं. Dear students, that was it for today. In next lecture we will be discussing different prepositions individually. So stay tuned and do watch the lecture. इस lecture के बारे में अगर कोई question, कोई query, कोई confusion रह गई हो तो ज़रूर पूछिएगा. I repeat it at the end of every lecture, but this is specifically true for the lectures of preposition, because there is so much diversity, there is so many different prepositions and there are so many different nouns, and even a slight change can change your preposition. So I can understand that it is a very complex and very lengthy topic. So if you have any question, if you have any query regarding the logic, regarding the reasons of these prepositions, do not hesitate to ask your questions. You have the comment box, and it is definitely for you and for your convenience. So do not hesitate to ask questions. Ask as much as you can, and obviously I shall be eagerly waiting to answer all your queries. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन जीते रहें, खुश रहें. बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए. अल्लाह हाफिज़.